Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome in a class. Students, I hope you all are fine. As we are studying unit number 1, that is human organ system. So let's start today's class. As in previous lecture, we have discussed about the nervous system and then we have discussed about the division of nervous system. So as nervous system is divided into two parts, that is CNS and PNS. So what does CNS stands for? CNS is central nervous system and PNS is peripheral nervous system. So then we have discussed about the brain. So brain is the part of CNS. CNS is further divided into two parts, that is brain and spinal cord. And then we have discussed about the forebrain. In today's class we will discuss in detail about the midbrain and hindbrain. So students, look at the picture. So the central part below the after the forebrain is a central and minor part is present and that part is known as midbrain. आपके पास जो forebrain है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उसके बाद सेरिब्रम एंड थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस और उसके बिलो आपके पास जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज़ नोन एज व्हाट? दिस इज़ नोन एज midbrain. Midbrain is the central part. It is in between the forebrain and hindbrain. Now what is the function for midbrain? So students, as midbrain is the central part, it is present between the forebrain and hindbrain. So its basic function is to transfer information and impulses between the forebrain and hindbrain. ये इंटरकनेक्शन का काम कर रहा है किसके बिटवीन फोरब्रेन और हाइंडब्रेन के, कि आपके पास जो फोरब्रेन है वो फर्स्ट पार्ट है एंड हाइंडब्रेन लास्ट पार्ट है. तो सेंट्रल पार्ट इज़ अ midbrain and it is serve as a connection between forebrain and hindbrain. So the basic function of midbrain is what? It is the basic function is to transfer information and impulses between forebrain and hindbrain. So basically it is work as an exchange of impulses and information between hindbrain and forebrain. And the next function is midbrain also serves to control some reflexes such as changing size of a pupil, यानी आपका साइज है एज के साथ साथ चेंज हो रहा है. दिस इज़ कंट्रोल्ड अंडर द midbrain. एंड आल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ आई, कि आपके पास अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ आई, कि ये आई के अंदर आपकी आई के अंदर कितनी वेवलेंथ है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो सकती है. सो इट इज़ जस्ट कंट्रोल्ड बाय द midbrain. And this part of the brain is also associated with vision, hearing, speaking and temperature regulation. It is concerned with what? It is concerned with the some actions, that is vision, hearing, sleeping and also temperature regulation in our body. So what is the basic function of midbrain? The basic function is to transfer information between what? Between forebrain and hindbrain. So its basic function of midbrain is to transfer information and impulses between forebrain and hindbrain, and it also regulate body temperature, vision, hearing and sleeping. And the third one function of midbrain is to control some reflexes such as changing size of the pupil. So this is all about the midbrain, and then we will discuss about the hindbrain. So hindbrain consists of basically three parts, that is the cerebellum, pons and medulla oblongata. So hindbrain is consist of three parts, that is cerebellum, pons and medulla oblongata. So what are the division of hindbrain? How many parts of hindbrain are there? There are three parts of hindbrain, that is cerebellum, pons and medulla oblongata. So first of all we will discuss about the first one part of the hindbrain, that is cerebellum. So cerebellum आपके पास क्या है कि जैसे कि हमने पहले कहा था कि हमने forebrain डिस्कस किया और ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, that is cerebrum. And the and which one is the second largest part of the brain? So cerebellum is the second largest part of the brain. So आपके पास ये येलोइश जितना भी पोर्शन है ये सारा आपके पास क्या है? cerebrum है. उसके बाद ये जो रेडिश पोर्शन जो बैक पे है दिस इज़ नोन एज cerebellum. So this is the second largest part of the brain and it is mainly concerned with the posture, balance and locomotion of the body, कि आपकी बॉडी की गैस्टर पोस्चर को कौन कंट्रोल करता है प्लस लोकोमोशन को कौन कंट्रोल करता है. सो दिस इज़ अंडर
control of cerebellum. So what is the basic function of cerebellum? It is mainly concerned with the posture and locomotion of the body and also help in the balance of body and their locomotion. So the next one part that we will discuss is pons. So the next one part is pons. बेसिकली स्टूडेंट्स पॉन्स आपके पास क्या है कि पॉन्स यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा सा एक ओवल शेप है, बिल्कुल छोटा सा माइन्यूट सा पार्ट है ब्रेन का, दैट इज़ नोन एज पोन एंड पोन इज़ द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. And where should it lie? So pons is a small oval structure above the medulla oblongata. So this one extension is a medulla oblongata और इसके ऊपर आपके पास oval shape में क्या चीज़ present है, that is pons. So what is the basic function for pons? It serves as a bridge for the conduction of impulses between cerebellum and medulla oblongata. ये simply आपके पास क्या है, impulse कैरी करने के लिए ये simply क्या चीज़ है, कंडक्शन के तौर पर कंडक्शन ब्रिज के तौर पर यूटिलाइज होती है, दैट इज़ बिटवीन द cerebellum एंड medulla oblongata. इन तीन के बिटवीन क्या है, ये एक ब्रिज कंडक्शन के तौर पर यूज़ हो रही है. सो इट इज़ आल्सो कंसर्न विद द रेट ऑफ ब्रीदिंग, स्लीपिंग एंड आल्सो रेगुलेट eye movement and facial expression in a human body. So what is the function for pons? So pons is concerned with the rate of breathing, sleeping and also regulate eye movement and facial expression in a human body. And then we will discuss about the medulla oblongata. Now students, what is medulla oblongata? So आपके पास ये जो extension सी आ रही है, this is just the extension of spinal cord and above the spinal cord a region is present and that region is known as medulla oblongata. So, medulla oblongata basically connect brain to the spinal cord. यानी कि ये आपके पास bridge है या फिर connection है between the spinal cord and the brain. And what is the function of medulla oblongata? So it control heartbeat, swelling, vomiting, coughing, sneezing and digestion in a human body. And one thing more, medulla oblongata is one of the special part of our brain which is always keeps on working when the rest of the brain does not work. यानी आपके पास वो पोर्शन है कि जो बाकी अगर रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो है वो स्लीपिंग कंडीशन में होता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा हमेशा क्या होता है, ये वर्किंग कंडीशन में होते हैं. So students, what is the function for medulla oblongata and what is the function of medulla oblongata? So it control heartbeat, swelling, vomiting, coughing and digestion in a human body. Students, as nervous system is divided into two parts, that is CNS and PNS, and CNS is further divided into two parts, that is brain and spinal cord. So as we have discussed about the brain and their types, and now we will discuss about the spinal cord. Now student, first of all open your books, page number 5, and you have to take your pencils for underline most important points. So student, जैसे मैं साथ साथ important points को underline करूँगी, आपने भी as it is important points को क्या करना है, underline करना है. So now we will discuss about the spinal cord. So spinal cord is an extension of medulla oblongata. कि जैसे भी हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, ब्रेन का जो लास्ट वन पार्ट है आपके पास ये क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और मेडुला ऑब्लिंगेटा से एक एक्सटेंशन यानी लंबी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड. सो इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा. एंड व्हाट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा? मेडुला ऑब्लिंगेटा इज वन ऑफ द स्पेशल पार्ट ऑफ ब्रेन which connect brain to the spinal cord. And where should spinal cord located? So spinal cord is located in the vertebral column. So आपने साथ साथ जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपने अंडरलाइन करना है. सो स्पाइनल कॉर्ड इज़ लोकेटेड इन द वर्टेब्रल कॉलम, यानी आपके पास क्या है, ये वर्टेब्रल कॉलम जो आपके पास बैकबोन में है, हियर आपके पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है. And what is the structure of spinal cord? So it is a tabular structure which is made up of bundles of neurons. की आपके पास क्या है, tabular structure है, and it is made up of millions of neurons, and its length may be according to the height of the body.
इट्स लेंथ इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जैसे आपके पास पर्सन की हाइट हो उसी के मुताबिक क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड की हाइट या लेंथ होती है, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्ट द ब्रेन टू द नर्व्स दैट आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी, कि यानी आपके पास ब्रेन से निकलती हुई जितनी भी आपके पास नर्व्स हैं ये पूरी बॉडी को ये नर्व्स किसके थ्रू जाती हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर जितने भी सिग्नल, जितने भी मैसेजेस ब्रेन से आपके पास जो है सडन जितने भी रिस्पॉन्सेज या जितने मैसेजेस जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी एंड बॉडी से वापस मैसेज ब्रेन तक जाता है और ब्रेन जो है उस पर वर्कआउट करके आपकी बॉडी को रिस्पॉन्सेज देता है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है देन आप जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं, पैरालिसिस अटैक हो सकता है या पैरालाइज हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ योर स्पाइनल कॉर्ड इज़ डैमेज देन message cannot convert from one part of the body to the another part of the body and result in paralysis. So आपकी बॉडी अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो आपकी बॉडी वर्किंग कंडीशन में नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? So what is spinal cord? Spinal cord is just an extension of medulla oblongata. It is located in the vertebral column. And what is the basic function of the spinal cord? It connects brain to the rest of the body, and it carries message from the different part of the body and transfer it to the brain, and then brain work out and convert message through the spinal cord to the rest of the body. If the spinal cord is damaged then message cannot convert from one part of the body to another part, and then this result in paralysis. As in today's lecture we have discussed about the midbrain, hindbrain and spinal cord. So midbrain is the central part of the brain which is present between the forebrain and hindbrain, and it control information between forebrain and hindbrain, and it also associate with vision, hearing, sleeping and body temperature. And then we have discussed about the hindbrain. So hindbrain consists of three parts, that is cerebellum, pons and medulla oblongata. And then we have discussed about the spinal cord. So spinal cord is basically extension of medulla oblongata, which is located in the vertebral column, and it is just tubular structure and its length is vary from person to person's height. Spinal cord is connect brain to the nerves present in all the body. If the spinal cord is most important in our body, which carries message from from body to the brain and from brain to body. If spinal cord is damaged then persons goes in a paralysis. Now students move towards the home assignment. So the first one question is explain the function of midbrain. So first of all you have to put the heading of midbrain. midbrain को थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर देना है एंड देन आपने उसके फंक्शंस को बुलेट्स की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने लिखा है द midbrain its basic function is to transfer information and impulses between the forebrain and hindbrain. And the next one point is it controls some reflexes such as changing size of the pupil to control the amount of light entering the eye. And the next one question is explain hindbrain and illustrate their parts. So first of all you have to put the heading of hindbrain and then flowchart of parts of hindbrain, that is cerebellum, pons and medulla oblongata. And then आपने within one line इनकी क्या करना है functions को आपने लिख देना है, that is जैसे कि cerebellum जो है mainly concerned with posture and locomotion of the body, pons concerned with the rate of breathing, sleeping and also regulate eye movement, and then medulla oblongata it controls heartbeat, swelling, vomiting, coughing and digestion. So students you have to write these questions with proper paper presentation, writing formation and date. प्रॉपर आपने मार्जिन लाइन ड्रा करके इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन से लिखना है एंड देन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लर्न करना है एंड देन लर्न करके बाय सेल्फ आपने इसको राइट करना है असाइनमेंट पेजेस पे एंड देन आपने 27 जनवरी को स्कूल में इसको सबमिट करना है। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स का आपने
साथ साथ अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखना है, क्योंकि आपकी फ़ेब में रिटन एनुअल एग्ज़ाम होंगे और आपके होमवर्क के 50% मार्क्स जो है आपके एनुअल एग्ज़ाम में लगेंगे। तो आपने एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है जो कि आपका फ़ेब में कंडक्ट होगा। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स के 31, जैसे कि आपको पहले भी अनाउंस किया गया था, 31 जनवरी को कॉलेज में एंट्री टेस्ट प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। तो बाहर से जो आना चाह रहे हैं उनको भी आप अच्छे से गाइड करें कि आपका एंट्री टेस्ट होगा प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। बट आप पूरी क्लास ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना है कि आपको पूरा कोर्स कवर करा दिया गया है। यूनिट 1 से यूनिट 12 तक आपका कोर्स कवर है। सो आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से साथ साथ प्रिपरेशन करके आपने स्कॉलरशिप टेस्ट को ज़रूर अचीव करना है। आप मस्ट इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दें, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने बाकी बच्चों को भी गाइड करना है और ख़ुद भी आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।